So now we will studying about social development, family, friends, school, community and institutions constitute the school context of children. Children have a specific role to play in these institutions. जो हमारी सोशल डेवलपमेंट है, हमारी सामाजिक डेवलपमेंट जो होती है वो हमें किससे मिलती है? हमारी फैमिली से, हमारी फ्रेंड्स से, स्कूल से, कम्युनिटी से और इंस्टीट्यूशन से जहाँ पर हम जाते हैं. इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे ट्यूशन्स हो गए, हमारे प्लेग्राउंड्स हो गए, हमारे पार्क हो गए, एनीथिंग. ओके, देन मॉरल डेवलपमेंट, हमारे नैतिकता का विकास. सो एवरी चाइल्ड एंड पर्सन फेस many conflicts in everybody life and move ahead after resolving them. हर एक के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आती रहती है और हमको उससे लड़के आगे बढ़ना चाहिए. बट नाउ वी रिसॉल्व दीज, बट हाउ डू वी रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट्स? और अब हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करें? हाउ डू वी जस्टिफाई आउट द एक्शंस एंड डिसीजन? हमको इन जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको जस्टिफाई कैसे करनी चाहिए, उन पर एक डिसीजन पे कैसे आनी चाहिए. रिजॉल्विंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर स्टडीड अंडर मॉरल डेवलपमेंट. और इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना हमारा मॉरल डेवलपमेंट कहलाता है. और मॉरल डेवलपमेंट मतलब हमारे मानसिकता का विकास. इमोशनल डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज सोशल डेवलपमेंट एज इट डेवलप्स विद द रेफरेंस ऑफ द सोशल लाइफ. जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो हम अपने सोशल डेवलपमेंट से इंटरलिंक कर सकते हैं, because they both are interlinked with each other as it develops with reference to the social life. और ये हमारे सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ पार्ट होता है जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है. हमारे जो भी इमोशंस जो होते हैं वो हमारे सोसाइटी से, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, इन सब से जुड़े हुए होते हैं. इट इंक्लूड्स हाउ वी एक्सप्रेस. और ये इसमें इंक्लूड होता है कि हम किस तरीके से अपने जो भी इमोशंस है, हमारे भाव है, उसको हम किस तरीके से सामने वाले के दिखाएं. लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमारे जो भी लैंग्वेज होती है, हम जो भी बोलते हैं, एक उसका विकास. नाउ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. इट्स फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल. In the context of child development, domains refers to the areas of child development which are independent of other domain and are yet interrelated. In the context of the child development, domains refers to areas of child development. So here we say that the domains of child development are interrelated with each other. Now we are going to the stages of development. There are 4 stages of development of child development. So now the stages of development, there are 4 stages of development. Prenatal, okay, time period of this period is 9 months 10 days. It is the fast development period of all the 4 stages. Infancy, it is the second stage of the child development. Time period is from birth to 2 years. So the third stage is childhood. This is a slow development stage. The time period is from 2 years to 12 years. Childhood is now divided into 2 subparts. First is early childhood. The time of it is 2 to 6 years. It is also known as preschool age, and it also known as pre-gang age. And the other stage is post, that is later childhood stage.
The time here is from 6 years to 12 years. It is known as school age, and second name is the gang age. The fourth stage is the adolescence. It is a fast development stage. It is in this stage the physical change in the body takes place. The time period of this stage is 12 years to 18 years. The ability of reproduction develops. The energy level is high and close to his friends. The child is now close to his friends rather than of his family. He is now with his age group people, not with the family. Before this stage, the child is dependent on its family. Now it's becoming an independent. When will the child be promoted? When will be the child be permanent member of the group? And the answer is the adolescence period. In the adolescence period, the child will be the permanent member of the group. Now, when will child do the heroship? Heroship means the role model. He will adopt a role model for himself. It's in this period only, the childhood stage. So, next stage is adulthood. After the adolescence, adulthood comes after the 18 years. It starts from 18 years of age. Now the direction of development. There are two directions of development. Cephalocaudal development. This development takes from head to toe. हमारे सर से हमारे पैर तक का जो डेवलपमेंट होता है, it is known as cephalocaudal development. The second development is the proxima distal development. It is from heart to hand, from center to outside. Now next is motor skill development. There are two motor skills, the gross motor skill and the fine motor skills. The gross motor skills are bigger movements and the fine motor skills are smaller movements. Gross motor skill like कोई बच्चा चलता है, it is a gross motor skill. Fine motor skills हाथों को उंगलियों को हिलाना, it is a fine motor. छोटा काम हो रहा है जहाँ पर हमारी big muscle moves हो, जहाँ हमारा ज़्यादा एनर्जी लगे वहाँ पर ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है, और जहाँ हमारी कम एनर्जी लगे, कम मसल्स लगे, वहाँ हमारा फाइन मोटर स्किल्स होता है. सो देयर इज अ क्वेश्चन, देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस in the rate of motor development, yet the sequence of the motor development is from dash to dash. The development is from gross motor development to fine motor development.